स्टार्ट हुआ था। नहीं सर, वो स्टार्ट ही हुआ था। एक एक ही क्वेश्चन कर रखा सर को। ओके। कैमरा ऑन कर लो सब लोग। ओके। राइट। सर्कल. Circle is locus of points whose distance from a fixed point called center from a variable point x comma y is always fixed. What is circle? Locus of points whose distance from a fixed point called center of the circle h comma k is always constant from a variable point x comma y. Variable point x comma y. So x comma y is a variable point. This is a fixed point called center, and r is the radius. So as such, standard form of circle will come from here. Distance PC is a constant which is equals to r. Distance PC would be x minus h whole square y minus k whole square equals to r. And if I square both the sides, it is the standard equation of a circle. So this is called standard equation of circle, where x and y coordinates of the variable point, h, k are the coordinates of the center of the circle, r is the radius of the circle. Then we also did this ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0. This is the equation of second degree. This is the equation of second degree, which may represent pair of straight line or a conic section. A, B, C, F, G, H are real numbers. Now there's a determinant delta, which is first row AHG, first column AHG. There's a determinant which has first row HG, first column AHG, principal diagonal ABC, and these two places F. This value of delta decides whether it's a you know uh, pair of straight line. तो अगर delta 0 होगा, it will be pair of straight line. If delta is not 0, it would be a conic section. Value of delta decides whether it's a pair of straight line or a conic section. ठीक है? Now in conic section also, it may represent a circle provided A is equal to B is equal to 1, H is 0.
along with delta not equal to 0, we it would be a circle and only if a and b both are 1, h is 0. तो फिर ये सर्कल बन जाएगा. h 0 का मतलब दिस टर्म विल नॉट बी देयर. किसी भी सर्कल के इक्वेशन में x इंटू वाई की टर्म नहीं आएगी. एंड इफ इट्स पैराबोला then h square minus ab should be equal to 0. If it's ellipse, then h square minus ab has to be less than 0. And if it's hyperbola, then h square minus ab will be greater than 0. So these are the conditions for circle, parabola, ellipse, and hyperbola. Now for circle, we have said that AB should be equal to 1, h is 0. So this equation will reduce to x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. So this is general equation of circle. This is general equation of a circle. X square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. And this general equation has center as minus g minus f and the radius as under root g square plus f square minus c. Hmm? Hmm. ये लिख लो एक बार. So this we have done ना, general equation. क्या था दिखा उसमें? क्वेश्चन जो किए थे इसके आगे होगा ना, इसके आगे होगा, स्ट्रेट लाइन है ये. अच्छा. ओके. तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, हम स्टैंडर्ड इक्वेशन यूज करेंगे या जनरल इक्वेशन यूज करेंगे. तीनों इक्वेशन में तीन अननोन्स है. उसका रीजन ये है बिकॉज कि थ्री गिवन पॉइंट से एक यूनिक सर्कल पास करता है. थ्रू थ्री गिवन पॉइंट्स वन यूनिक सर्कल passes. That's why there are three unknowns. यहाँ भी देखो, you need to find G, F and C. यहाँ भी H, K and R. Three unknowns, three equations. एक क्वेश्चन लिखो. Find equation to the circle. Find equation to the circle which passes through the points 0, 3, 1, 4 and 5, 7. Find equation of the circle which passes through 3 points 0, 3, 1, 4, 5, 7. How to start? Let the equation of the circle be this. There are three unknowns. Substitute the points in place of x and y. Find G, F and C. कर लो. पहले substitute करो 0, 3 x, y की जगह. Then you substitute second point, then third point, and then solve. और तुम्हारे पार्टनर का है?
एग्जाम बात नहीं हुई उससे? हाँ, वो तो बहुत दिनों से नहीं आ रही। तुमने कर लिया इंटीग्रेशन सारा? सी निकाल के सब्स्टिट्यूट कर देना। यहाँ से सी आ जाएगा इसमें और इसमें। देन टू वेरिएबल्स, टू इक्वेशंस। You can find C from first equation and then substitute another two. पहले पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर लो। Form three equations. From equation two, substitute C in the third and fourth equation. फिर दोनों को सॉल्व करके जी एन एफ निकालो। चेक कर लेना कहीं गलती नहीं होनी चाहिए। 18F कैसे आ रहा है? ये कैसे आया? 03 डाला। हो गया ना, सारा गलत हो गया। हर स्टेज पे चेक कर लेना। ठीक है। टू से डिवाइड हो जाता पूरा। ठीक है। फिर भी हर स्टेज पे कैलकुलेशन चेक कर लेना, अदरवाइज you'll मेक some silly mistake. When you substitute C, it'll be 17 plus 2G plus 8F. C is minus 9 minus 6F. Hmm? 2G plus 2F equal to minus 8। और इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो 74 plus 10G plus 14F minus 9 minus 6F equals to 0. That gives you 10G plus 8F equals to minus 65। इक्वेशन सिक्स, इक्वेशन फाइव। फाइव को यू मल्टीप्लाई बाय 4 एंड सब्ट्रैक्ट। कौन सी? आ गई?
अब एफ एंड जी को यू सब्स्टिट्यूट इन दैट इक्वेशन, या इसको कर दो, इसमें डाल दो, सी आ जाएगा। कितना आ रहा है जी? जी एफ कितना आ रहा है? हाँ, हो गया। हाँ, अब उसमें डाल दो सी वाले में। नहीं नहीं, सेंटर क्यों निकाल रहे हैं? सर्कल में डाल दो ना, सीधा सीधा जीएफसी की वैल्यू, हो गया। आफ्टर फाइंडिंग जी एफ एंड सी सब्स्टिट्यूट इन द, सी कितना आ रहा है? -80, 85, 84। ठीक है। सो इक्वेशन 5 यू मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4g plus 4f equal to -32, and then you have 10g plus, oh, 8f is equal to -65. Subtract 33. So g is coming out to be -33/2. F is coming out to be minus, and c is -80, and then you get the equation of circle. So three equation, three unknowns, and we get the answer. Equation of circle is x square plus y square -33 x, हाँ। अगर तुम्हें सेंटर निकालना है तो क्या करोगे? कोइफिशिएंट और एक्स और वाई को -2 से डिवाइड कर दो। 33/2 -25/2 इज द सेंटर। रेडियस निकालना है तो फिर सॉल्व कर सकते हो सब्स्टिट्यूट करके, फॉरगेट दिस, अभी वो नहीं कर रहे। सो वी नीड मिनिमम थ्री इक्वेशंस टू गेट द इक्वेशन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, राइट? सेंटर ऑफ सर्कल -g - f होता है ना, यहीं से आ रहा है। सेंटर ऑफ सर्कल इज -g - f। डन, अर्शिया, जानवी, जायना, अनुज। यस सर। ओके। हाँ। Now suppose we have general equation of circle and it's intersecting x-axis at 2 points. And this length is called length of x-intercept. Let's find the formula for the length of x-intercept. If a circle intersects x-axis, what is the length of x-intercept? इसको ले लो, x1, 0. This is x2, 0. This length will be x2 minus x1. So let's find x2 minus x1. Find length of x-intercept. Length of intercept cut by the circle on x-axis. तो जहां पे सर्कल एक्स एक्सिस को टच करेगा वहां पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा। सोचो कैसे करोगे, x2 माइनस x1 कैसे आएगा? On x-axis we have y coordinate equal to 0. So we can replace y as 0 in this equation. This is a quadratic equation.
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं, एक x1 कॉमा जीरो, दूसरा x2 कॉमा जीरो. So you can find x1 x2, you can find x2 minus x1. This quadratic has roots x1 x2. तो हमें x2 minus x1 निकालना है. तो क्या करना चाहिए? कुछ याद आ रहा है क्वाड्रेटिक का? क्वाड्रेटिक का टेस्ट दिया था मैंने? नहीं ना? लास्ट टेस्ट कौन सा हुआ था? हाँ, तो क्वाड्रेटिक का टेस्ट बचा. ठीक है. उससे बेटर है सम ऑफ रूट्स निकाल लो ना. हाँ. नो, 2g भी नहीं होगा. सम ऑफ रूट इज माइनस b बाय a minus, and the product of root is c by a. So you have x1 plus x2, you have x1 x2. use the identity. कौन सी identity यूज करोगे? Identity is x2 minus x1 चाहिए ना मैं. Square is equal to x2 plus x1 whole square minus 4x1 x2. Use this identity. Use this identity to find x2 minus x1. कर लो. So that will be the formula for length of x-intercept. Now ले लो 4. 2 आ जाएगा बाहर. हाँ. So that is the length of x-intercept. रूट ले लो उसको. 2 बार under root. So this result you have to remember. x2 plus x1 whole square is 4g square, and this is, so length of x-intercept is twice g square minus c. This result you have to remember. Similarly, we can also find length of y-intercept. A circle intersect y-axis. If a circle intersect y-axis, the length of y-intercept. This time, x will be 0. And your answer would be 2 times f square minus, लिख लो. So the length of x-intercept is twice g square minus c. Length of y-intercept is twice f square minus c. What if a circle touches x-axis? Circle touching x-axis. So the circle is touching x-axis. तो फिर length of x-intercept कितना होगा? 0. So length of x-intercept would be 0. That means g square equal to c. Condition for a circle to touch x-axis. लिख लो. Condition for a circle to touch x-axis is g square is equal to c. Condition for a circle to touch x-axis. G square is equal to c. डायग्राम भी बना लो. वो जी स्क्वायर इक्वल टू सी का मतलब है जी की दो वैल्यूज आएंगी, प्लस माइनस रूट सी. इसका मतलब क्या हुआ? अगर इफ देयर आर टू वैल्यूज ऑफ जी, जी इज बेसिकली द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल. दैट मीन्स देयर विल बी टू सर्कल्स बिकॉज एक one circle would be here, another would be here. G would have two values, plus minus root c. G is the x coordinate.
For the, I mean, x coordinate would be different, y coordinate would be the same. Minus f, this would be, no, root c, here, root c. This would be minus root c, comma, minus f. So for when a circle touches to x-axis, there'll be two answers. What if a circle touches y-axis? Condition for a circle to touch y-axis. Touching y-axis. So in that case, this intercept would be 0. Y-intercept would be 0. If a circle touches y-axis, its y-intercept would be 0. F square is equal to c. And again, f के दो आंसर होंगे for the same value of x coordinate. So there'll be two circles like this. There's another result if a circle passes through origin. Suppose this is a general equation of circle and it passes through origin. C would be 0. If a circle passes through origin, the constant term will be 0. But there'll be no constant term. Because when you substitute x equal to 0, y is equal to 0, C 0 आएगा. So any circle which passes through origin will not contain constant term. It will be without C. What if a circle touches both the axes? If a circle is touching both the axes, G square equal to F square equal to C. And there'll be such 4 circles. If a circle is touching both the axes, we'll have G square equal to F square equal to C. Write a question. Find equation of the circle. Find equation to the circle which passes through origin. Equation to the circle which passes through the origin and touches x-axis, given its radius is 5 units. Given its radius is 5 units. Sir, can you repeat once? Equation to the circle which passes through origin, touches x-axis and has radius 5 units. Thank you. Origin से पास कर रहा है, x-axis को टच कर रहा है, रेडियस दिया है. सारी कंडीशन अप्लाई कर सो लेट द रिक्वायर्ड सर्कल भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2ay प्लस c और फिर कंडीशंस अप्लाई कर लो 1 by 1. एक्स एक्सिस को भी तो टच कर रहा है, वो भी तो लगाओ. नहीं, ये वाला यूज मत करो ना, जनरल इक्वेशन कर रही हो ना तुम.
If a circle passes through origin तो कितना हो गया C? And touches x axis के साथ मतलब क्या हो गया? जी भी 0 हो गया. फिर रेडियस कितना दिया हुआ है? तो g² + f² - c अंडर रूट रेडियस होता है. तो अंडर रूट ऑफ g², जी तो 0 है, f² - c भी 0 है, तो ये हो जाएगा मॉड f इक्वल टू +-5. अंडर रूट x² हमेशा मॉड f होता है, याद रखना ये. f की दो वैल्यूज आ गई भाई. अगर कोई सर्कल एक्स एक्सिस से पास भी कर रहा है और एक्स एक्सिस को टच भी कर रहा है, तो ऐसा थोड़ी कि सर्कल ऐसा बनेगा, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है फिर पास भी कर रहा है तो ऐसा बन गया. ऐसा तो हो नहीं सकता. इट हैज टू टच एट द ओरिजिन ओनली. नहीं, अगर सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है और एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो ओरिजिन पे ही टच करेगा. हाँ, तो इट हैज टू बी. दो आंसर क्यों आ रहे हैं? एक नीचे होगा एक ऊपर होगा, लाइक दिस. दिस वुड बी 0, -5, 0, 5. इक्वेशन क्या आ गई? x² + y² + 2g, वो 0 हो गया. 2f(y) +-10y +c, तो 0 है ही सही. सर्कल हो गया ये. x² +-10y = 0. नेक्स्ट, फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल. Equation to the circle which has a radius 3 units and touches both the axes. Radius 3 units and touches both the axes. ये प्लस सी नहीं होता, माइनस सी होता है. ये प्लस में रूट सी क्यों लिख रही हो? g² = c होता है. g की वैल्यू +-√c होगी ना. सिमिलरली f की वैल्यू +-√c होगी. हाँ, तो दिस टाइम जो कंडीशन है तुम्हें ऑलरेडी मालूम है क्या है. हम्म The circle is touching both the axes. That means g² + f = f² = c. ये condition you need to apply. And what about radius? Radius is root of g² + f² - c = how much? 3. So this is also c, this is also c, this is also c. So root of c is equal to 3. c हो गया 9. The moment c is 9, g² is 9, g would be +-3. f² is also 9, f would be also +-3. There'll be 4 combinations. F or 4 circles, x² + y² + 2gx, मतलब +-6x +-6y = 0. No, it won't be 0. +c. So one circle is here. इस सर्कल का इक्वेशन बता सकते हो क्या होगा इस वाले का? It will not be plus plus, it will be minus minus.
because center is when you divide by -2. Center इसका है 3, 3. What about this? Center is 3, -3. X square plus y square minus 6x plus 6y. You see the center is -g minus f. उल्टा होगा. This would be -3, 3. X square plus y square plus 6x minus 6y plus 9 is equal to 0. And what about this? -3 minus 3. This would be plus plus. X square plus y square plus so 4 circles. Next is position of a point with respect to a circle. A circle. Position of a point with respect to a circle. Suppose we have now on any conic section, write S. X square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. And there's a point x1, y1. When you substitute the point in the equation of conic, it is called S1. X1 square, y1 square, 2gx1 plus 2fy1 plus c. When you have substituted the point in the equation of the circle, it is x1 square, y1 square plus 2gx1 plus 2fy1 plus c. Now this point with respect to the circle could be outside, could be on the boundary of the circle, or it could be inside. How to identify? Using this value S1, you can identify if S1 is positive, the point lies outside. If S1 is 0, point is on the boundary of the circle. If S1 is negative, less than 0, it is inside. This result will hold true for all conic sections except hyperbola. In hyperbola, the result would be reversed. Hyperbola में result उल्टा हो जाएगा, बाकी parabola, ellipse and circle same result. Circle में भी S1 more than 0 outside, S1 equal to 0 on the boundary of the circle, S1 less than 0, it's inside. Suppose we have a circle like this, and the point is 5, 6. Can you locate the position of the point with respect to the circle? Point को substitute करो, value से decide होगा inside है outside है.
-5 क्या आ रहा है? -5 inside आ गया. So S1 is coming out to be -5. That means this point lies inside. Now, if the point is inside the circle, through this point, how many chords can be passed? How many chord will pass through the circle? One. Infinite. Infinite chords. There'll be infinite chords. There'll be many chords. ठीक है, बहुत सारी chord होंगी. But among all those chords, there'll be one chord whose midpoint would be this. सिर्फ एक ऐसी chord होगी जिसका midpoint ये point होगा. Now the next question is find, लिखो, find equation to the chord, find equation to the chord whose midpoint is 5,6. Find equation to the chord whose midpoint is 5,6. सोचो. हाँ, बचपन में पढ़ा था तुमने. बचपन में किया था ना, सेकंड क्लास में, सिक्स्थ में किया था. If you draw perpendicular from the center to the chord, it always bisects. लिख लो. Perpendicular from center of a circle. Perpendicular from center of a circle to the chord always bisects the chord, and vice versa. Perpendicular from the center of the circle to the chord, any chord bisects the chord. अगर तुमने center of circle से midpoint को ज्वाइन किया तो वो perpendicular भी होगा. दोनों केसेस होते हैं. कर लो, अब हो जाएगा. डायग्राम बना लो. स्ट्रेट लाइन तुम्हें याद ही होगा थोड़ा बहुत तो. 1 पॉइंट फॉर्म याद है? वो क्या था? इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन 1 पॉइंट फॉर्म. So this is the chord. We know the midpoint, right? 5,6. We know the center of circle. Center of circle क्या है? -2 से डिवाइड करो. 3,2. This is the center of circle. So you can find the slope of CM. Then you know the slope of AB because वो perpendicular है. Perpendicular line का slope का product is always. So find the slope of CM. Find the slope of AB. And then use 1 point form. Find slope of CM, slope of AB, and then 1 point form. स्लोप कैसे बहुत पुरानी बात हो गई ना. हद हो गई. स्लोप y2 - y1
और क्या, ये तो होता है स्लोप, और दूसरा होता है नहीं कुछ। तो इक्वेशन में लाइन हुई ना। स्लोप इज ऑलवेज दिस व्हेन यू हैव 2 पॉइंट्स, और फिर इसका परपेंडिकुलर स्लोप निकाल लो। इसमें गलती मत करना। आ गया स्लोप, आ गया ए बी का। ए बी का स्लोप कितना आ रहा है? उसका रेसिप्रोकल नेगेटिव कर दो, ए बी का आ जाएगा। (6 - 2) बस। तो ए बी सी एम का स्लोप आ गया 6 - 2 by 5 - 3, दैट इज 2। ए बी का आ गया -1/2। तो इक्वेशन हो गई y माइनस, इट पासिस थ्रू 5,6, ए बी पासिस 5,6, y - 6 इज इक्वल टू -1/2 x - 5। क्या रहा सॉल्व करके? x + 2y होगा, माइनस, दैट इज द इक्वेशन टू द chord whose midpoint has been given। ये आ रहा है सभी का। नाउ इन द केस ऑफ सर्कल तो हमने ये कॉन्सेप्ट लगा लिया। एलिप्स में क्या करते हैं? पैराबोला में क्या करोगे? व्हाट विल डू इन केस ऑफ हाइपरबोला? सो वी हैव अ रेडीमेड मास्टर ब्लास्टर फॉर दैट, वो समझ लेते हैं क्या होता है। Now let's try to understand how do you convert S into T. This is a shortcut formula in all conic section. Remember this. T is equal to S1 gives you equation to the chord whose midpoint has been given. लिख लो। T is equal to S1. T is equal to S1 gives equation to the chord whose midpoint has been given. Now the question is, T क्या चीज है? तो किसी भी कोनिक सेक्शन का अगर हमें इक्वेशन मालूम है, वी कैन ऑलवेज कन्वर्ट दिस इक्वेशन ऑफ कोनिक इनटू टी। कैसे? उस कोनिक की इक्वेशन में जहां भी एक्स स्क्वायर आ रहा है उसको x1 से रिप्लेस कर दो। उस कोनिक की इक्वेशन में जहां भी वाई स्क्वायर आ रहा है उसको y1 से रिप्लेस कर दो। जहां भी 2x आ रहा है रिप्लेस इट बाय x + x1, एंड वेर एवर यू हैव 2y रिप्लेस इट बाय y + y1। रेस्ट सेम रहेगा, c की जगह c आएगा। दिस इज द मेथड टू कन्वर्ट s इनटू t। कन्वर्टिंग s इनटू t। अब जरा देखो यहाँ पे करते हैं जो मैं दे रखा है ना। दिस पॉइंट इज बेसिकली x1 y1। ये है x1 y1। नाउ दिस टाइम आई विल बी यूजिंग द शॉर्टकट मेथड। आई एम रीराइटिंग इट x² + y² -3 × 2x। 6 को आई हैव रिटन 3 × 2x। 4y को मैंने 2 × 2y कर दिया, ठीक है। अब ये अप्लाई करो। रिप्लेस x² बाय x(x1). रिप्लेस 2x बाय, रिप्लेस x² बाय x into x1, 5x, प्लस रिप्लेस y² बाय y1, that is 6y, रिप्लेस 2x बाय x plus x1, रिप्लेस 2y बाय y plus y1। फिर सॉल्व करो, देखो क्या आंसर आ रहा है। x तो पता है ना तुम्हें, x1 कितना है? हाँ 5 डाल दो, अभी डाल दो। हम्म, इसकी जरूरत नहीं थी।
डायरेक्टली कर लेते तुम। 2x की जगह x प्लस, इसको 2 को काटो, ये 2 नहीं आएगा। 2 नहीं है बिकॉज 2x को रिप्लेस कर रहे हो ना, नॉट x। एंड व्हाट इज 2y? y प्लस y1 minus 12. So 5 minus 3x, 2x, 6y minus 2y plus 4y minus 15 minus 12 minus 12 equal to 0. C is the same answer. आंसर तो सेम नहीं आ रहा है, 19 आ रहा है। तो पिछली बार क्या 19 था क्या 17 था जो हमने वैसे निकाला, देखने जरा। 12, अच्छा। इसमें क्यों नहीं आ रहा फिर? Hmm, where's the problem then? Replacing x square by xx1, y square by y1. 1 minute, we made a mistake. Now t is equal to s1. So this t is equal to s. What is s1? You already found s1, no? s1 कितना निकाला था? -5 equal to -5. So now what is the answer? 2x plus 4y. This is 34. Yeah. So you get the same answer. So t is equal to s1 will be the equation of chord whose midpoint is known to us. And you know how to convert. You know how to find s1. Substitute the point in the conic. s1 आ गया. And to get t, this is what you have to use. And this will be working for all conic sections, the same formula. T is equal to S1 holds for all the conic sections. I suppose there's a point which is 7 comma -3. Substitute करना, x square plus y square minus 6x minus 4y. मैं 7 comma -3 substitute करके तो क्या वैल्यू आ रही है? Tell me the value when you substitute 7 comma -3 in this equation. अनुज? Sir, I guess 16. 16 आ रहा है। 49 plus 9 minus 42 plus 12, कितना आ रहा है? 28 प्लस और माइनस। अब बताओ, टेल मी द पोजीशन ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x minus 4 minus 28 equal to 0. Equation of the circle is x square plus y square minus 6x minus 4y minus 20. हाँ, यस। अब पॉइंट डालो, इसमें S1 निकालो। पॉइंट डालो सर्कल के इक्वेशन में। पहले कांस्टेंट टर्म नहीं दिया था ना मैंने, अब कांस्टेंट टर्म भी 28 है, -28। अब देखो क्या आ रहा है। ये क्या कर रही हो तुम? ये तो मैंने पूछा ही नहीं था।
नहीं, शॉर्टकट कुछ नहीं डाला हम। क्वेश्चन ऐसे समझ लो, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल एंड देयर इज सम पॉइंट, टेल मी द पोजीशन ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल। ये पॉइंट सर्कल के रेस्पेक्ट में कहाँ है? इनसाइड, आउटसाइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड? क्यों? सर्कल। Yes, so it is on the circle. So if the point lies on the circle, we can always find equation of tangent and normal to it. तो ये tangent होगा इसका, and normal would be this. Normal is very normal, which passes through the center of circle, which is 3 comma 2. See, the question for you is find equation of tangent to the circle and normal to the circle. कैसे करोगे? So you can differentiate equation of the circle with respect to x. Substitute the point and you get dy by dx, and that will be nothing but slope of the tangent. And then you can use 1 point form. dy by dx nikalo. First, you differentiate the entire thing with respect to x. Wherever you have x, replace it by 7, and wherever you have y, replace by -3. That will be the slope of the tangent. Find dy by dx by differentiating the equation of the circle. थैंक गॉड, डेरिवेटिव तो याद है। अब x को रिप्लेस करो 7 से, y को रिप्लेस करो -3 से, dy by dx निकालो। वेर यू हैव, ये क्या dy by लेफ्ट में क्यों लिख रही हो? भूल गए डेरिवेटिव इस, क्यों? दोनों वेरिएबल x एंड y हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म डेरिवेटिव, हाउ कैन यू फॉरगेट दैट? गलत है ये। y का डेरिवेटिव नहीं आएगा 4y का। सब्स्टिट्यूट कर दिया, इक्वल टू 0 भी तो था राइट साइड में। और ये dy by dx खा गई तुम? अच्छा, दोनों ले लिया ना, ठीक है। हाउ कैन यू फॉरगेट डेरिवेटिव? x square is 2x, y square is 2y dy by dx, 6x would be 6, 4y would be 4 dy by dx equals to 0. Now x is 7 and y is -3. So 14, 6, that'll be 8, 6 and 4, 10. कितना आ रहा है स्लोप? dy by dx कितना आ गया? हाँ, क्या बात कर रही हो? बिल्कुल सही है। This is nothing but the slope of the tangent. Whenever you differentiate a conic section, substitute the point, you get the slope of the tangent. अब 1 point use 1 point form and get equation of tangent. What is 1 point form? 1 point form is y minus y1 equal to slope of the tangent x minus x1. Use 1 point form to get the equation of tangent. हाँ, पॉइंट तो वही है ना, x 7 -3। स्लोप यू हैव ऑलरेडी फाउंड, स्लोप निकाल लिया है ना। क्या रहा था स्लोप? 4/5। ठीक है। ये dy by dx कहाँ से आ गया था? ये तो पैरामेट्रिक वो है ना। दिस इक्वेशन इज बेसिकली इक्वल टू 0। दिस इज इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन में तुम dy by dx कैसे लिख दोगे यहाँ पे? हम्म, y -3, ठीक है, 4/5 मल्टीप्लाई किया, ठीक है, सही है। सो कहते अब नॉर्मल निकालो। सो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ tangent? y minus
3, which is positive. Slope of tangent is 4/5 x minus 7. ये आ गया. उसको +3 किया था ना, साइन चेंज नहीं किया. हाँ, ठीक है. So equation of tangent is coming out to be 4x minus, हाँ, 43. ये tangent की इक्वेशन आ गई. नॉर्मल कैसे निकलेगा? Normal is perpendicular to it. So you can use 2-point form. You can use no, no, not midpoint. You can use like you know the slope of the normal. You can find slope of the tangent. Or I told you the shortcut also, if you remember. Once upon a time, हमने shortcut किया था. किसी भी line के perpendicular line कैसे निकलता है? If you want to use that, you can do that also. Interchange the coefficients. इसका interchange इसका 4 है, इसका -5 है. -5 को इधर लग के +5 कर दो. 4 को you write this side. Replace x by x minus x1. Replace y by y minus y1. अच्छा 7 था ना वो तो. y minus. So this is the normal equation. 4x 5x plus 4y ये कितना हो गया? -35 plus 12. So normal is quite normal. ये आ गया. Or else ये नहीं करना है. You know the slope of the tangent 4/5. So you find equation slope of normal reciprocal with negative sign. And then you use 1-point form. Y minus y1 equal to slope x minus x1, which is 7. ऐसे कर लो. So even this will give you the same answer. One more thing. If two lines are perpendicular, you can verify it also that this number into this number, plus this number into this number would be always 0. 20 minus 20 is 0. तो हमने कोनिक को डिफरेंशिएट किया. वी फाउंड dy by dx. जब भी dy by dx निकालोगे कोनिक को डिफरेंशिएट करके स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा पॉइंट सब्स्टिट्यूट करके. ठीक है. और उसका रेसिप्रोकल कर लोगे नेगेटिव साइन का तो स्लोप नॉर्मल आएगा. अब मैं इसका शॉर्टकट बता रहा हूँ. इक्वेशन बता लग गई. द शॉर्टकट इज व्हेनेवर अ पॉइंट लाइज ऑन द बाउंड्री ऑफ ए कोनिक, एनी कोनिक, नॉट सर्कल ओनली, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का शॉर्टकट मास्टर ब्लास्टर है t इक्वल टू 0. नाउ यू यूज शॉर्टकट एंड गेट द आंसर. अब t क्या है? अरे t कैसे निकालोगे? हाँ करो उससे. अब शॉर्टकट मेथड से करो. लंबा मेथड तो सीख ही लिया. t इज इक्वल टू 0 से फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन से रिप्लेस किया, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन से रिप्लेस किया, 2x को किया x प्लस एक्स वन से. लाइक दैट. यूज दैट शॉर्टकट मेथड नाउ. हाँ ये भी बुरा नहीं है इसको लिखना, इसमें गलती नहीं होगी. सेम आ रहा है. शॉर्टकट्स किया. शॉर्टकट करो. रिप्लेसिंग एक्स स्क्वायर बाय एक्स एक्स वन, रिप्लेसिंग वाई स्क्वायर बाय वाई वाई वन. एक्स प्लस एक्स वन. ठीक है. वही आंसर आएगा. So if you choose shortcut method, the shortcut method
we have the equation replacing x square by xx1, 7x, y square by y1 minus 3y. 6x you write as 3 into 2x. 2x you replace by x plus x1. Minus 4y you replace by 2 into 2y. 2y is y plus y1. Minus 28 is equal to 0. 7x minus 3x is 4x. Minus 3y minus 2y minus 5y. Then minus 21 plus 6 minus 28. Same आ रहा है? The answer will be the same. So now you know the shortcut method. हाँ ऊपर वाला. Because नीचे वाला तो वो है ना normal. So whenever you have a conic section and you want to, and a point lies on the boundary of the conic, then t is equal to 0 always gives you equation of the conic. Right? Then what if the point is outside the circle? Next, the last situation, x square plus y square minus 6x plus 4y plus minus 30 is equal to 0. Suppose this is the circle. And there's a point which is minus 5 comma 6. Find the position of the point with respect to the circle. कर लो. S1 निकालो. Position of the point with respect to the circle. S1. S is conic, S1 is, इसको तुम S लिखा करो और जो पॉइंट डालोगे तो हो जाएगा S1. S equal to 0 means equation of conic. When you substitute the point in the equation, it is S1. क्या आ रहा है? 85. Negative, positive. That Positive. means Positive. point is outside the circle. So this is the situation. Circle का center कितना है? 3 comma minus 2. And just divide it by minus 2. You get the equation center of the circle. Now the point is outside the circle. Point is outside the circle, which is minus 5 comma 6. So from outside point, you can always draw two tangents. क्या बोलियो? इनसाइड था? क्या बात करो? 85 पॉजिटिव 85 आ रहा है इतनी जोर से. तुमने सॉल्व नहीं किया? तो फिर पॉजिटिव में तो आउटसाइड होता है. ऐसा जुल्म करोगी? पॉजिटिव आउटसाइड, नेगेटिव इनसाइड. सिर्फ हाइपरबोला में उल्टा हो जाएगा. तो यू कैन ड्रॉ टू टैंजेंट फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट टू द सर्कल. और जहां पे वो टैंजेंट टच करेगी वो बेसिकली 90 डिग्री होगा सर्कल के हमेशा. ये डायग्राम तुम्हें याद आ रहा होगा बचपन में. The two tangents are equal in length to outside circle. I mean, outside point, say if you draw two tangents, they're always equal in length. PA is equal to PB. These two triangles are congruent. है ना? Yes. And this AB is called, this AB का, what is the name of AB? याद है किसी को? AB is a chord. भाई कौन सा chord है? कौन से पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है? जहां पे वो कॉन्टैक्ट में टैंजेंट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं इसको. कोई बात नहीं, अब कर लो. Because the two tangents are in contact at these points, so this chord is called chord of contact. And इसका shortcut master blaster है, इसकी equation है t is equal to 0. हर कोनिक में काम आएगा ये.
t इज इक्वल टू 0, जब पॉइंट ऑन द बाउंड्री था तो टेंजेंट की इक्वेशन थी, जब पॉइंट आउटसाइड है तो वही t इज इक्वल टू 0 क्या बन गया, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। एंड वन मोर थिंग, दोनों टेंजेंट की जो कंबाइंड इक्वेशन है उसका फॉर्मूला है एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। ये वैसे देखा जाए तो सिलेबस में थोड़ा सा बाहर है, बट ऑल दिस विल हेल्प अस इन एंट्रेंस, फिर भी हम कर रहे हैं। एस एस वन टी स्क्वायर गिव्स अस, लिख लो, एक कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट, हाँ दोनों की कंबाइंड इक्वेशन फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट टू अ कोनिक। हर कोनिक सेक्शन में यही चलेगा, अगर पॉइंट आउटसाइड है, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट टू द कोनिक। कोनिक का मतलब सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। So if the point lies outside the conic, then the combined equation would be always SS1 is equal to T square. अगर यार रिकैप कर लो, बिकॉज बहुत सारी चीजें नई नई हो गई अब। Those results will hold for all conics except the position wala, that will hold only for, except for hyperbola। हाँ उसमें रिवर्स हो जाता है, द पोजीशन वाला, हाँ उसमें लेस देन में आउटसाइड हो जाएगा, हाइपरबोला में पॉजिटिव में इनसाइड हो जाएगा। क्या लिखा है? वैसे तो tangent is also removed from the syllabus, but still we'll do it. Condition for the line y is equal to mx plus c to be tangent to the circle x square plus y square minus r square equal to 0. The simplest circle whose center is at the origin. This is a circle x square plus y square minus r square equal to 0. Simplest circle whose center is at the origin. And there's a line y is equal to mx plus c. This line can go like this. This line may intersect the circle like this, or this line could be intersecting the circle at one point. Matlab it'll be tangent. So it could be tangent. If it is intersecting at 2 points, it's called secant. And this is not touching at all. कैसे पता करोगे? One method is you find the distance between the line and the point. Distance between the center of the circle and the line. You know how to find distance between a line and a point. याद आ रहा है? Once upon a time किया था ये, बहुत पुरानी बात हो गई। If there's a point x1, y1 and there's a line, all you have to do is replace x by x1, y by y1 and divide by root a square plus b square. This gives you perpendicular distance between a point and a line.
This is a formula for perpendicular distance between a line and a point. Then go through the notes of straight line. So if D is and R is the radius of circle. So if D is more than R, तो क्या होगा? If distance is not, it will not touch or intersect. If the distance of the center of circle is more than the radius, it will not intersect, right? If D is less than R, the line would be a secant, matlab intersecting at two distinct points. And if D is equal to R, then line would be touching the circle. It would be tangent. So if D is equal to R, line would be touching the circle at one point, that is, it is tangent to the circle. Now the question is, how do you find distance of this line from the center of the circle? The line is mx minus y plus c equal to 0. So distance you can find using mod. What is the point? 0, 0. M into 0. Y is also 0. C divided by root of a square plus b square. So this is how you can find distance between the center of the circle and the line. Replace x by x1, y by y1, rest as it is, divide by a square plus b square. And condition for tangency is d is equal to r. So c divided by root of 1 plus m square equals to r. Remove the modulus sign, there will be plus minus. So this is the condition for tangency. C of the line should be equal to plus minus r under root 1 plus m square. Just remember the condition. C of the line should be r into 1 plus m square. Why plus minus sign? Because there will be two tangents with the same slope. One would be here, another would be here. With the same slope, there will be two tangents. Find C for tangency. Circle is x square plus y square minus 9 is equal to 0. Line is y is equal to 5x plus c. Do it. Find C so that line is tangent to the circle. Identify M, identify R, identify C, substitute in the formula. डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक है? सीधा सीधा फॉर्मूला यूज करना है. लाइन का M, लाइन का C आइडेंटिफाई करो. मेथड नहीं करना है. लाइन सर्कल का R निकालो, लाइन का M, लाइन का C, फॉर्मूले में रिजल्ट में सब्स्टिट्यूट. डिराइव नहीं करना है, डोंट हैव टू डिराइव. Straight away use this result. If you compare this, R square is 9, that is R is 3. Then you compare this line with y is equal to mx plus c. So what is m? 5. Replace over here, c equal to plus minus r. R is 3 under root 1 plus 25. So c would be
plus minus 3 root 26. So for this value, it is tangent to the circle. One more question. सर्कल के एक्शन में आर स्क्वायर आता है ना, तो फिर वहां आर है, फॉर्मूले में तो आ रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन. सपोज द सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर minus 10 is equal to 0 and the line is 3x plus 4y plus 2c equal to 0. Find c so that the line is tangent to the circle. Find c so that line is tangent to the circle. वही करना है. Identify m, identify c, identify r. हाँ, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो ना, y इक्वल टू mx प्लस सी. ये तो गलत है तुम्हारा m. y को फाइंड करो. राइट द लाइन इन टर्म्स ऑफ y इज इक्वल टू mx प्लस सी. So 4y will be minus 3x minus 2c. So y would be minus 3 by 4 into x minus 2c by 4. So this would be your m. And this would be your c. And what is your r? R square would be 10, r would be root 10. So now you substitute. In place of c, you write minus 2c by 4. In place of r, you write under root 10. 1 plus 9 by 16. So minus c by 2 plus minus root 10 and this would be 5 by 4. ये आएगा. So c would be plus minus 5 root 10 by 2. That's your answer. C is not c. C is minus c by 2. M is minus 3 by 4. Line को you need to convert into slope intercept form. Y is equal to mx plus c. Right then, ending the class. See you in the next class.